patriotbazaar.com. Patriot, powered by Amity University. Viewers, I'm at the School of Artillery in Devlali, and it's my great privilege to present to you Lieutenant General Ranbir Singh Salaria, Vishish Seva Medal, Commandant School of Artillery, and Colonel Commandant, Regiment of Artillery. Sir, welcome to Patriot. Thank you so much, Gaurav. I would like to ask you, sir, my first question to you will be, what is the history of artillery in India? When did it start? Devlali is something very special, not only for the gunners, but I feel anybody who comes to Devlali gets attracted to a very peculiar spirit which exists over here. Sir. There's a very unique spirit of Devlali which binds all of us together. Sir. All of us have got commissioned over here. We spent so many years coming and going in Devlali, coming for training or getting posted over here as instructors, going back and again coming back in a different rank. And throughout our career, we found that there's a very unique spirit of Devlali which binds all the gunners together. Sure. Devlali is a very old cantonment. Yes, sir. It was established way back in 1867, almost 150 years back. Sure. And it's got a unique history, which is a different story altogether. Yes, sir. History of the Indian artillery. As we know, the general perception is that artillery came to India with Babur in the first battle of Panipat in the year 1526. Yes, sir. When he defeated Ibrahim Lodi. Yes, sir. But the first recorded use of artillery in India goes back to the year 1368 in the Battle of Adoni, which took place in the Deccan only. Yes, in the sir. Deccan, between the Bahmani kings. There was Muhammad Shah Bahmani, Sir. who fought against the Raja of Vijayanagar. Sir. And it is Muhammad Shah Bahmani who first used artillery cannons in India Sir. against the Raja of Vijayanagar. Sir. He was victorious, and his guns were basically manned by the Rumi and the Persian gunners. All right, sir. And the historians that time gave the word top. They described these cannons, which they saw for the first time as top. And top is a Portuguese word, Sir. T-O-P-E, which means actually guns. Gun, sir. So that is the first recorded use of artillery in India. Viewers, soldiers always speak about caliber and gunners more so because they own the large calibers. Now, I have a very special gunner with me here, an officer who has seen calibers ranging from the smallest to the largest. My privilege to present to you Major Arpit. Major Arpit, welcome to Patriot. Thank you. And you are an instructor in the Rocket and Missile Division? That's correct, sir. Absolutely. Pleasure to meet you. Now, Major Arpit, tell us, your story is a little unique. And your story is unique because from 300 mm to 7.62, you have seen it all. We'll not speak about the 300. Let us speak about the 7.62. You were posted in Kashmir. Yes, sir. You were in the Rashtra Rifles. And this here is the Op Rakshak ribbon and the RR badge there. I want to know about your experiences in Kashmir. How does it feel for a gunner to leave the missiles, leave the rockets for a while, pick up an AK-47 and start operating? How's that feeling? So just as we say in artillery, it's Sarvatra. Yes. So just like that, the gunners are Sarvatra. Okay. I have had a very amazing tenure in Rashtriya Rifles. Approximately 2.5 years I have spent in the Kashmir Valley in Baramulla district. Okay. And it was a pretty satisfying tenure as far as I'm concerned, sir. Did it feel strange to have an AK in your hand because you're used to massive weapons, you're used to huge weapons?
Bofors or a 120 or a 105 or a 300 Smudge. You're used to such big weapons. Generally, gunners are not used to smaller weapons, but suddenly the missiles go away. Rashtra Rifles doesn't have any missiles, it doesn't have any rockets. And there you are with your AK. How was that feeling? Different? Absolutely, sir. It was a very different feeling because we are in a purely CI role over there. Yeah. And more than that, it's not just the counter-terrorism role over there. We are in a role of building in the Kashmir Valley. Okay. Whenever we go out, there is a way that you see people, you see us. We are carrying the image of the Indian Army when we are in the valley. That's very important. So yes. we actually have to take care of all our actions. We have to be very careful what we do with the 7.62 mm caliber. Yes. That 7.62 should only be targeting somebody who is actually a terrorist. Yes. It should be a boon for somebody who is an innocent. Yes. And by and large, sir, I must tell you, in the Kashmir Valley, by and large, people are like just you and me. Yes. I belong to Sriganganagar in Rajasthan, and the concerns that parents have over there for their kids, Yes. I find people having similar concerns for their kids. Yeah, this is very interesting, Major Arpit. You're saying that you belong to Sriganganagar in Rajasthan, and the concerns that parents have for their kids in Sriganganagar are similar to the concerns that the parents have in Kashmir Valley. The same things. बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, खुद का बिजनेस कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, यही है कश्मीरियों के जो परेशानियां हैं, डे टू डे परेशानियां. So mostly, sir, we are all human beings in the end. हाँ. They also want their kids to have the best of education. Yes. They want their kids to go outside, learn and earn. Yes. So you'll find a lot of kids from the valley studying in different parts of India. They have simple concerns. They just want a good home for themselves. They want a good education for their kids. They want maybe a decent car for themselves. And that is all the concerns that people have there. By and large, the majority is, I believe it's pretty good. How did RR help you in relating to the people? I'm very interested in knowing because, whenever I meet senior officers of the Indian Army, I visit, headquarters, wherever I visit, all of them without exception, including the commandant here, I spoke to General Salaria, and he also stressed a lot upon the morality of the Indian Army. It's a moral army. They keep saying moral army because I think they believe in it very strongly. It's a moral army. The Indian Army is a moral army. ठीक है, there might be incidences here and there, but by and large we try to connect with the local population. What has your experience been like connecting with the local population? You were a company commander there in RR? I was a company commander there in RR, sir. कैसा रहा experience? And again, I had an amazing experience and an amazing connection with the locals. Yes. I still have phone numbers of many of them. I'm still connected on various social media platforms and most of them. Yes. And they still call me. If they come here nearby, they come and meet me. I was there during the flood rescue, the September 2014 floods that were there. अच्छा. I was incidentally there at that point of time in the valley, and we did a lot of rescue operations. In fact, it is just to say, the first particular day, we even our own rations that we had kept for ourselves, we had distributed among the locals. So they see these gestures, sir. As you said that we are a moral army. Yes. We have to take care. Once we are wearing this uniform, we have to take care that this uniform comes with a responsibility. Yes. And that responsibility is what we need to be careful about. That image is what we need to be careful about. And that is the reason, sir, you will find Indian Army doing whatever best it can in the valley. How do you manage this duality in your mind? I mean that एक तो RR की image है. RR Rashtra Rifles in Kashmir has this larger than life image, ना? Sir. Rashtra Rifles यहाँ पे बैच पहन के जाते हैं तो सबको पता लगता है RR आ रही है. लेकिन उसके अलावा RR का वही बंदा जो है, वो एक बच्चे का हाथ पकड़ के सड़क पार करा रहा है, एक बुजुर्ग को दवाई दे रहा है, राइट? ये दो इमेजेस हैं ना, पर ये दोनों सच हैं. Tell me something about that. So the idea behind functioning of RR is iron fist in a velvet glove. Okay. It is the iron fist for the terrorists. Yes. It is the velvet glove for the everybody else. Yes. So I have to maintain that particular Balance, duality. I have to maintain that particular balance as a company commander. Yes. It should never happen, and we ensure, sir, there are procedures, there are drills and procedures existing within the RR, Yes. which ensures that no innocent is targeted unnecessarily. We should be approachable to the innocents, which we try our level best to be, and slowly and steadily, I believe it is going to bear fruits as well. Yes. Major Arpit, thank you so much for speaking with us.
there are times when these guns cannot be mechanically moved. They have a tractor to move them, but they can't be moved because maybe the tractor can't reach that place. Hence, these guns, more than 3,500 kilograms in weight, have to be physically manhandled and moved from place A to place B. This is what the demonstration will show. Now, this is your typical Indian Army 105mm field gun with a range of 17.2 kilometers. This is the mainstay of the Indian Army, a very, very effective gun. And now they're going to show you how they will move this gun, and they will also show you how to fire this gun. Watch very carefully. This is the mainstay of the Indian artillery. Battery target 895 25423 220 895. This is Major Deepak here, and he's actually an instructor in the School of RT. Now, today on our request, he is the OP officer. So he's going to be here. He's going to be directing the fire. This is an observation post. It is tactically sighted. He's here with his team. So there are technically 3 people in the OP post, and an OP comprises of 3 people. I'm the 4th from outside. Major Deepak, tell us, what is the work, what is the job of an OP here? OP करता क्या है पहले ये बताइए. Okay. Firstly, this is like OP position. What is a OP post? OP post is a tactically sighted position from which the complete target is under surveillance. Now, OP officer along with his team, that is OP party, which comprises of an operator and a technical assistant. They work out the technical data of the target and passes it to the guns. Now guns, based on this data, they compute the data and they fire on the data computed. With this technical data firing coming, we will have the fire, the orders which I have already given. All right. So you're saying that आप ये अपना जो इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट, उससे आप कैलकुलेट करते हैं कि फायर कैसे होगा, टारगेट कहाँ पे है, वो आप रेडियो ऑपरेटर को बताते हैं, रेडियो ऑपरेटर फर्दर पास करते हैं और इसको कंप्यूट करके वो लोग फिर अपनी गन्स फायर करते हैं. अच्छा, एक बार टेल मी मेजर दीपक, एक बार गन्स ना, लाइक आपका ये टारगेट है और इसके ज़रा ऊपर और दाएँ फायर हुआ, यहाँ पे फायर हुआ, उसको आपको करेक्ट भी करना पड़ेगा उसको, तो ये आप करेक्ट कैसे करते हैं? Based on our equipments which we have, not only our visual observations, we have various kind of equipment with us. Like this is a binocular. Apart from this, this is a thermal imaging integrated observation equipment. Now, apart from this, we have compass, we have maps and other equipments, like we have new generation equipment in front of you. This is enhanced technical computer. Okay. With the help of these equipments, we will be able to find out what is the deviation or the deviation of the round from the actual target where was it desired to fire. So based on this, the correction is worked out, and based on that correction will be passed through this radio set to the guns. So for example, if let's say this is the target and it fires here, so you can tell him ki you're firing, above 100 and right 50, yes. For example. Yes. Just an example. So he tells that data to those boys there at the gun level, they correct it, yes. and then they fire. Correct. So ऐसे कर करके माना कि तीसरे चौथे राउंड पे आपको ये पता लग गया कि जो गोला है वो टारगेट पे गिर रहा है. Correct. Then what happens? The moment we have corrected the fire onto the target, yes, then we can go in for adjustment of MPI. That's the procedure which we call, yes, in which we will call the fire of the complete fire unit. Yes. They will fire on the target, and if we adjudge that the fire is coming out to be accurately of the complete fire unit,
then we can go in to punish the target, that is called as fire for effect, wherein we can bring in fire from all the fire units available to punish the target and neutralize the target. So you're saying that when you say punish the target or fire for effect, then आपको ये पता लग गया है कि हाँ ये हमारा जो एक्चुअली जिस ग्रिड पे डलना था या जिस पॉइंट पे डलना था उस पॉइंट पे डल रहा है. नाउ फायर फॉर इफेक्ट यानी ओपन अप. Yes, ओपन अप. because we have a economy of ammunition also we have to take care of. We cannot go in for fire for effect or punishing the target before we have adjusted onto the target. So we have gone for the adjustment before. Once we are confirmed, then we go on for the main punishing of the target, and with the firepower available, the target is neutralized or destroyed as are the aim of the shoot be. ऑलराइट. दीपक एक बात बताइए, जैसे कि बोफोर्स की बात करते हैं या 130 mm की बात करते हैं या कोई भी और वेपन सिस्टम्स है, ओपी प्रोसीजर सबका एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? बेसिक प्रोसीजर. जी, बेसिक प्रोसीजर हर इक्विपमेंट का, अगर आप ओपी का प्रोसीजर की बात करें तो लगभग प्रोसीजर सबका सेम होता है. बट कुछ इक्विपमेंट में कुछ स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं जो उसमें अलग से हम सीखते हैं और अलग से फॉलो किए जाते हैं. लेकिन जो बेसिक सिखलाई है और बेसिक तरीका है वो सेम रहता है. बेसिक तरतीब वही है. बेसिक तरतीब वही है, बेसिक इक्विपमेंट भी वही है. जैसे यही इक्विपमेंट जो आपके सामने रखा है, यही थर्मल इमेजर और ये ETC दैट इज एनहांस्ड टैक्टिकल कंप्यूटर, इन दोनों की मदद से भले ही मेरे पास गन 130 हो या बोफोर्स हो, मैं दोनों से कम्युनिकेशन में रह सकता हूं और एक ही इक्विपमेंट से दोनों से फायर ले सकता हूं. अच्छा, एक टाइम पे, हमारे टाइम पे पुराने तो हम देखते थे, बिकॉज मैं तो आर्टिलरी से नहीं हूँ, पर हम देखते थे वो बड़े सारे वो मैप और चाइना ग्राफ पेंसिल और दुनिया भर का सामान उनके पास पड़ा रहता था. यहाँ पे टांग के चलते थे लोग. आजकल ये कंप्यूटर्स आ गए हैं. जी. मैं बात कर रहा हूँ मेरे 25 साल पहले, 20 साल पहले. आजकल तो कंप्यूटर्स आ गए, तो इनसे काम तो आसान हो गया है. लेकिन जो ओरिजिनल सिखलाई है, जो मैनुअल करते हैं, जी, वो भी आप लोग अभी वो भूले नहीं है, वो भी आपके पास है. हमारी सबसे पहली सिखलाई तो उसी पर है. आज के दिन भी अगर मुझसे बात की जाए, अगर हम सिखाते भी हैं, अगर हम किसी को 10 दिन सिखाएंगे तो 5 दिन हम उसको बेसिक उसी पे सिखाएंगे, बाकी 5 दिन हम उसे जो आज के नए इक्विपमेंट है उन पे सिखाएंगे. तो मेजर दीपक एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता हूँ एज अ कॉमन सिटीजन, मुझे अगर कोई आर्टिलरी के बारे में नॉलेज नहीं है, जी, और ये सच है कि मुझे आर्टिलरी के बारे में नॉलेज बहुत कम है, हाँ, लेकिन बिकॉज मैं इन्फेंट्री वाला हूँ, मैंने कभी इतनी बड़ी तोपों से फायर नहीं करा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर मैं ये कंप्यूटर आपसे ले लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, सिर्फ आपको रेडियो सेट, क्योंकि रेडियो सेट तो पहले भी था, जी, वो हमारे टाइम पे वो NPRC 25 हुआ करता था, ये वही वाला है, जी, ये स्टार भी है अभी, ये दूसरा आ गया, एवरीथिंग इज चेंज्ड. ठीक है, including this ground sheet that you have put, this lovely digital camouflage. I have never seen this before because we used to have ground sheets during our time. Okay, so basically if I just give you one radio set, जी, and I give you a normal map and compass and China graph pencils or whatever, जो पुराने टाइम का इक्विपमेंट था, can you still call on, आप फिर भी accurately फायर कॉल ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई अंतर नहीं होगा फायर में. भले आप मुझे सिर्फ एक मैप और एक रेडियो सेट देके भेज दीजिए, या ये इक्विपमेंट देके भेज दीजिए, बस समय और तरतीब में अंतर, तरीके जिस तरह से मैं फायर लाऊंगा उसमें अंतर आएगा. फायर में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं आएगा. टारगेट फिर भी वैसे ही बर्बाद होगा जैसे होना चाहिए था. एनिमी और टारगेट वैसे ही बर्बाद होंगे. वैसे ही बर्बाद होंगे. Major Deepak, it was pleasure talking to you. Thank you very much. (5th of March, 1994), Officers Training Academy, Madras. It used to be Madras those days. It has been 24 years and 3 months since we have met. Viewers, today I'd like to introduce you to somebody who 24 years and 3 months back used to be JUO, Vivek Sharma, Mactilla Company OTA, my course mate and very close friend. Vivek, welcome to Patriot. Thank you, Gaurav. Thank you. Nice to meet you after 24 years. Nice to meet you after 24 years and 3 months. Yeah, exactly. All together, and it's been a pleasure. Yeah. So we're going to speak to Colonel Vivek, and it's been a long journey. And the idea of this entire package was this: that we have had separate journeys. Colonel Vivek is an officer in the artillery, and I am now in the media, and we have had totally different paths, but the thing that binds us together is the brotherhood of the Indian Army, all under the blessings of that beautiful tricolor that you see at the backdrop. So Vivek, tell us what happened. You were in the academy, you were a junior under officer, you were an appointment, and I was a GC, and what happened? उसके बाद हुआ क्या दोस्त? You opted for artillery, you got artillery. फिर क्या हुआ? Thank you, Gaurav, for giving this opportunity, and what a nice coincidence when we are interacting here. Absolutely. And
हम देखते थे आपको टीवी पे एंड वी वर वंडरिंग वेदर यू नो द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड जो व्हाट वी इम्बाइब्ड इन वाइल दोज रोलिंग डेज एंड गोइंग थ्रू ऑल दोज हेल Front roll and back roll. Both. and those academy cricket team ventures. Yes. So nice to see that you know you've here and you know you are the voice of us and we feel proud of you. And I'm equally proud to belong to such a beautiful family. I never imagined that in my life that, you know, I would be accepted by the Brotherhood of Olive Green. And here we are today outside this beautiful building in Devlali, and you're here and we meet after 24 years and 3 months. So Vivek, what happened? You got commissioned into artillery. फिर हुआ क्या उसके बाद? गौरव आई वॉज वन ऑफ द लकी इनफ कि जो मैंने मांगा था वो मुझे मिला और उसके बाद मैं तोपखाने में आया. उसके बाद तोपखाने में तकरीबन मैं अभी मेरी टोटल सर्विस 24 साल हो गई है. उसमें से तकरीबन 18 साल मैं तोपखाने में रहा हूँ और 6 साल मैं बाहर रहा. और इनिशियली काफ़ी मेरे को मौका मिला बाहर जाने का. जब हम आते हैं तो हमारा बेसिक वायुज कोर्स यहाँ पे चला. उसके बाद फिर मैं वापस यूनिट गया. हम सिक्किम में डिप्लॉयड थे. आरटी वाले चले गए देवलाली, हम लोग चले गए माओ. या बिल्कुल. तो यहाँ के बाद हम गन पोजीशन ऑफिसर का जो मेरा कोर्स था उसको करने के बाद मैं वापस यूनिट गया. वहाँ पे रहा. फिर मिडिल लेवल कुछ कोर्सेज़ किए और उसके बाद मैं एक्सपोजर मिला मेरे को फिर से इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ काम करने का. अच्छा. मैं एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में एज ए G2 डिप्लॉयड था. अच्छा. फिर वहाँ पे मेरा जो जज्बा था इन्फेंट्री वाला वो जागा. अच्छा. और उसके बाद मैंने आरआर के लिए इन्फेंट्री वाला जागा जो बेसिक हमारा सोल्जर है वो जागा. और फिर मैंने आरआर के लिए ऑप्ट किया. राष्ट्रीय राइफल के लिए ऑप्ट किया और मुझे एक बहुत ही बढ़िया राष्ट्रीय राइफल बटालियन मिली जो बहुत ही पुरानी राष्ट्रीय राइफल थी. 5 RR में मैंने काम किया. 5 RR. और जो उस समय इलाका होता था गांधरबल का इलाका जो कि बहुत ही फेमस इलाका है. उस समय पुलिस डिस्ट्रिक्ट होता था. अभी एक एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट है. तो वहाँ पे मैं गया. गांधरबल में कुछ इंसिडेंट्स बताइए. जब आप थे वहाँ पे तो राष्ट्रीय राइफल्स में या तो हमने तो बड़े किस्से सुने आरआर के. अब पता नहीं कौन सा किस्सा कैसा है. यू हैव टू टेल अस, यू हैव टू टेल आवर व्यूअर्स कैसा था गांधरबल में. गांधरबल जब हम गए वहाँ पे तो काफ़ी डिस्टर्ब था और उस समय क्या है इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे. 2001-2002 की बात है. अच्छा. हमारा काफ़ी उस समय रोल था एक्टिव वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हमने ऑपरेशंस किए. रात को हम ऑपरेट करते थे और दिन में हम लोगों के साथ सद्भावना करते थे. तमाम हम लोगों को मोटिवेट करते थे. और एंड में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वहाँ पे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था कि लोग वहाँ पे स्कूलों में बोलते थे कि हमें मतलब आर्मी ज्वाइन करना है और हमें एक तरह से आर्मी के साथ रहना है. और हमारा जो रेपुटेशन था बहुत अच्छा रेपुटेशन था 5 RR का उस समय. अच्छा. तो इसका मतलब लोकल्स का दिल भी जीता, ऑपरेशंस भी करे, जी मिलिटेंट्स भी मारे. जी 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 जी. लेकिन वही फौज का उसूल जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा उसको मारना है, बाकी लोगों को परेशान नहीं करना है. जी जी. बाकी लोगों को साथ लेकर चले. डेफिनेटली तो इसीलिए वारदात नहीं हुए क्योंकि सबको साथ लेकर चल रहे. अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ ना. हम लोग टीवी पे देखते हैं काफी कुछ, ये पत्थरबाजी हो रही है. सब लोग ये कहते हैं कि ये जो पत्थरबाजी करते हैं ये बहुत थोड़े लोग हैं. ज्यादातर कश्मीर की मेजॉरिटी है, वो क्वाइट मेजॉरिटी है जो इन सब लोगों से बहुत परेशान है. इसमें कितनी सच्चाई है? गौरव, आई एम श्योर आपने अपना होमवर्क किया है एंड यू आर एक्चुअली टॉकिंग ट्रूथ. एंड लेट मी टेल यू व्हाट यू आर मेंशनिंग इज एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज दिल उनका अभी भी हिंदुस्तानी है. अगर आप आइसोलेशन में बात करेंगे, एक एक कश्मीरी से बात करेंगे तो आपको लगेगा, हाँ प्राइवेट में बात करेंगे आपको लगेगा कि वो बिल्कुल हमारे अपने लोग हैं. और मैं प्राइवेट की भी बात नहीं करूँगा. मैंने वहाँ पे VDMs किए हैं. वहाँ पे काफ़ी जैसे VDMs हम जाते थे, लोगों को गांव में एकत्रित करते थे, उनसे बात करते थे और अपना समझ के बात करते थे. तो हमारे को वैसा रिस्पांस आता था. हमें छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं. वहाँ पे स्कूल्स हैं तो तमाम जैसे मैंने आपको बताया कि 20-25 गांव हमारे नीचे थे. तो जनरली कंपनी कमांडर वहाँ पे एक तरह से मतलब जब वो जाते हैं तो कंपनी कमांडर का काफ़ी मान होता है. लोग वहाँ पे उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं. अगर आप उनके साथ अच्छे हो तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे वो लोग. तो हमारे को भी स्कूलों में बुलाया जाता था एज अ चीफ गेस्ट. तो 2-3 बार मैं गया हूँ वहाँ पे भी. जब भी हम कभी मौका मिलता था तो वहाँ पे एक स्कूल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है. एक लड़के को बोला, 6वीं क्लास का लड़का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, गडूरा गांव था वो. अच्छा. तो वहाँ पे उसको बोला गया कि अपने पे उसका टॉपिक था कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहूँगा. तो वो उस समय उसने एक ऐसी बात कह दी और मेरी आंखों में पानी आ गया. उसने बोला मैं बड़ा होकर कंपनी कमांडर साहब बनना चाहूँगा. अरे वेरी गुड. सो यू आर अ रोल मॉडल देयर. तो इतना अच्छा लगता था कि लोग हमारे को अपना समझते हैं और हमारा इतना सौहार्द है उनमें और हमारा इतना उनसे तालमेल है कि वो दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद यू. तो दैट वाज द थिंग. तो व्हाट यू आर टेलिंग, ये पत्थरबाजी वगैरह तो हमने कभी सोचा नहीं था. हमारे साथ कभी सोच भी नहीं सकते कि अभी वहाँ पे ऐसा कभी हुआ है. उनका वहाँ पे फौज जिंदाबाद के नारे लगे हैं.
आपके सामने जी। एंड विवेक, सच अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। Thank you, thank you, दोस्त Gaurav, इतने thank you, साल के बाद thank मिले, you, बहुत thank अच्छा you, लगा। thank PolicyBazaar.com, Patriot, powered by Amity University.